All right, ladies and gentlemen, welcome to yet another episode of the Ashish David Show. I am Ashish David. I like to talk to you every time it's another person from another location. Right now, it is somebody from another part of this country of ours, right? But he might be at a different location, but there are a lot of similar things between him and me. He's a voiceover artist. He's a sound guy. He's also has a background in radio and production. A lot of these things I have in common with him. And the most amazing part is that he also discovered the Ashish David Show, just like you're discovering the Ashish David Show right now. And he was like, यार मैं भी आना चाहता हूँ इस शो पे. Why don't I try? And just like him, anybody out there who wants to share their life story, you know, who's reasonably okay with communicating, like I don't want somebody to come on the show and say like, yes, okay. You know, if you can communicate, if you can speak in Hindi or English, मतलब आप किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मुझे वो समझ में नहीं आएगी तो बातचीत हम लोग कैसे करेंगे. Also, you need to have Skype installed on your phone or laptop. You know, if you have a hands-free, that's good. If you have a stable Wi-Fi connection, सोने पे सुहागा. All right. And yeah, if you're like the kind of person who's not shy and wants to communicate, you want to, you know, make your story inspire people around the world in 65 plus countries on 12 plus global platforms. We are on Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Public Radio, and so many more. All right. All that doesn't matter. What matters is our conversation and the fun we're going to have. And well, without any further ado, I would like to give a huge Ashish David Show welcome to Debarjo Banerjee, aka Joe. Welcome, Debarjo. What's up? Hi, Ashish. How are you? Finally, we got a chance to be on the Ashish David Show. You know, like a big, a logo review. The Ashish David Show. Of course, it wouldn't sound as good as your voice, but like, man, you're sounding pretty good as it is, man. Super, without any processing, Thank without you. any compression, EQ, gain, you know. Oh my God. Any of these fancy plugins. So, Yeah. so Debo, tell us about how are you feeling to finally be on the show, man? We've had so many conversations. Yeah. Yeah, I'm finally here. It's like so many, so many things are going on in my head, man. Like, I was planning, okay, I will say this to Ashish. Okay, when I meet him, I'm going to say this. I'm going to say this. Like, nothing works out now. I'm totally blank. So you have Superb, man, superb. So tell us, about your name and how you would describe yourself to somebody who doesn't know anything about you. Oh man, my name, by God, ये तो मतलब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई मेरा नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता. आज तक मैंने किसी को नहीं देखा. फर्स्ट टाइम यू आर सेइंग इट राइट, बट आज तक everybody screws up my name because I think it's because it's a 3-syllable name. Even my family people sometimes say weird things. So I said, भैया एक काम कर लो. My name is Debarjo. So the last part of my name is pretty okay and pretty global. It's Joe. So anyone can say Joe, right? So ये मैं Joe हूँ और इसलिए sometimes I say my name is Joe Banerjee. And apart from that, I'm in the same profession as yours. I think that's the reason why, not the same profession, of course, but our passions are the same with voice and radio and production. So if like anyone like has a script for me, I can read for them. But for a price, of course. But, Of course. Some years back, or some months back, I think last year, sometime around this time, like I was going through a lot of voiceover work and all that. So I found this amazing voice. I just wanted to know who this person is. Singing. He's singing. He's telling stories. He's doing ads. He's like this voiceover. Everything in voiceover, like the range is very high. So I thought who this person is, because I'm also a little experienced in voiceover. So I said that okay, chalo find out karte hain. So I just followed him, like followed you on social media. के बाद में जाके पता चला कि ये हैं आशीष डेविड और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो हैं ही, साथ में बहुत बड़ा प्रेजेंस है इनका, जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट लोगों का नहीं होता है बिल्कुल भी.
you know, like आजकल के ज़माने में everybody needs to have a social handle or something, but we voice over artists tend to be, you know, behind microphones. यही अच्छे हैं, ठीक है, चलो जैसा करके वो तो चल जा रहा है. तो but this person has a lot of presence, so let's follow him. तो follow करते करते अचानक ये चैनल के बारे में पता चला. फिर I started following you and your friend doing so many nice, you know, videos, coming out with so much content. That is what impressed me कि यार वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट लेके खड़े हो जाते हैं किसी और की लिखे हुई स्क्रिप्ट, लेकिन फिर भी ये जो है ये कंटेंट भी बना रहे हैं और अभी इनका चैनल भी आ रहा है. So I was so hooked on to your channel, and then one day you said that announcement. You did that. If you want to be on the show, you just gotta do this. I said, "Oh God, this is. Oh yes, I want to be on the show. I want to be on the show. Sure, you know, I should be able to share." And finally, like you know, you agreed, and I'm lucky that I'm on your show. Yes, the Ashish David Show. Oh my I love God, that. your I love voice the is sounding sound great, man. Your voice sounding great, bro. And thank you for all the compliments. यार मुझे ना ऐसा लगता है तुमने ये बात जो बोली ना बिल्कुल सही बोली है. बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं who are very successful, but you know they like to be behind the mic, like ऐसे ना छुप जाते हैं वो. ऐसे छुप जाते हैं. माइक के पीछे छुप जाते हैं. बना हुआ रहता है, पॉप स्क्रीन के पीछे छुप जाते हैं कभी-कभी. हाँ, वो मेरा पॉप स्क्रीन कहाँ पे है? वो अभी कहीं पे तो है, but यहाँ नहीं है अभी. And yeah, I mean, like, see, I always, you know, encourage people to get out of their shell and kind of put yourself out there, you know, on social media, because यार अभी कोविड के टाइम में क्या है कि no matter how popular you might be in smaller circuits, now there is only one circuit, which is the global circuit, you know. So if you're out there, people will know you. If you're not there, then you will remain limited to that small circle. And that is also another thing that I'm trying to do with this, you know, show, is trying to make us join forces, you know, hold hands rather than, I mean, not physically hold hands. You have to keep distance these days. But, you know, metaphorically speaking, you know, we have to connect and join forces and maybe, you know, help each other out in whatever way we can, you know. And one of the ways in which I have been helping out people is kind of, you know, putting out videos where I'm giving tips to voiceover artists. I think you had seen some of those videos as well. That basically, that was what hooked me on. Like this guy, this Mr. Ashish David, what he's doing is he's giving away important voiceover tips for free. I mean, which somebody takes years and years to learn and train and maybe under someone. And they're really good advice. I mean, I would like, through this show, I would like to tell people, if you just watch those videos that Ashish you have sent out, you know, if they're just somebody's paying attention, they're really good pieces of advice, like how to read a script, how to prepare for a voiceover. I've gone through those tutorials that you give, not only your usual content. This is something like, you know, a person who's not there in the studio, who doesn't have a plush studio like you do right now. I can see in your background a lot of acoustic foams happening and all that. A lot of us, trust me, Ashish, you might be having your own studio. A lot of us voiceover guys, we don't have such setups at our place, okay? So, like, you know, we don't, like, many of us have been thrown into this. Like, चलो studio नहीं होगा, घर से करना पड़ेगा. लेकिन कभी-कभी ये एक माइक के पीछे जो माइक के पीछे जो आदमी खड़ा हुआ है, वो ऐसे वॉइस ओवर टिप्स दे रहा है, इतनी अच्छी वॉइस ओवर टिप्स यार. लाइक इफ एनीवन फॉलोज देम, that's going to start them up, and like, you know, they can have a good, they can make it big actually. Well, you know, I'll tell you how those videos started, man. The thing was, they मेरी कोई इतनी, you know, अच्छी intentions या ऐसा कुछ, वो मैं मतलब ऐसा साधु बाबा नहीं हूँ कि, you know, what got me started was I got irritated, man. I was irritated with the bad general low quality voiceovers that were coming out and what people thought was voiceovers, you know. They just thought saying something in front of a mic is equal to voiceover, and that infuriated me beyond belief. मतलब मेरे अंदर का ड्रैगन ना ऐसे जाग जाता था और अंदर से फायर उगलती थी. And it was so annoying. You know, I mean, you know what I mean, bro. Like when you hear a piece of production which is not mastered or EQ'd and the frequencies are all over the place. You know, when someone does a bad job of anything, it hurts you. All right? And rather than being angry, I was like, yaar,
अब ठीक है, I mean like there are a million people out there who are probably, you know, better than me, and that is fine. But whatever little experience I have, Ashish, you are a pro, and I know it because I've seen your tutorials and your videos. The kind of production that you have, not only the production in front of the console and all that, the kind of audio production, the way you manage your voice, man, it's like. First of all, you're gifted. You have a gifted voice. Not everybody has such a lovely voice like yours. Like, you know, the highs and the lows. And the biggest part, Ashish, I'm surprised. This is what I've been wanting to tell you from, like, I have never met or seldom ever met people who have good voiceover skills and at the same time singing so well. You're such a great singer. This is not like, you know, all I'm sounding like I'm all praises and all that, but really, man, it's like, you know, singing so well, like, you know, all your singing videos, if somebody like, you know, strings, if you have a best of singing videos, all of them, your voice is sounding like, so your voice is melodious and at the same time it can carry a message. This is something, a rare quality of, you know, on a voiceover person I've seen, according to me. Thank you so much, man. So you know, fortunately, I was in the, just say, if somebody asks me, right? So I just say that, see, the talent that you have, or the voice that you have is either you have it or you don't have it. Like, you know what I mean? You can of course work with what you have been given, but that basic raw material is either there or not there. And funnily enough, Right. you don't have any say in that. So if I was given that talent, or if that was there, put in me through some other force, then it's the force which was kind enough, you know. But now that I have that, what do I do with it is also a big thing. So That is the most important. so I thought, यार वो जो है या नहीं है वो तो मैं change नहीं कर सकता लोगों का. But now what they have and how they can work with it is something that I can probably help people with. Is why I thought that, you know, with my whatever quality of experience or, you know, time that I've given to this profession, if I can put out some content out there which helps people get from point A to point B, no matter how small or long that journey might be, eventually I will stop getting irritated. So I thought, you know, chalo yaar, jo bhi hai, dal do, you know, because I a lot of people tell me that I can teach voiceovers, but and it's something that I've been putting forward for like 17 years of me doing voiceovers, and I'm like एक दिन करूँगा, but वो एक दिन अभी तक आया नहीं है. तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा कि मैं पूरा एक कोर्स डिजाइन करूँ, and I start giving online lessons, which is also like a quite a lucrative thing if somebody wants to get into it. But I thought rather than that, let me just answer small questions that people have, doubts, because that is something I can manage. To take the responsibility of being a teacher and a coach and getting people, students enrolled, that is a big responsibility which I would love to do maybe at some point of time in my life when I stop getting phone calls to do voiceovers. But वो अभी आया नहीं है 17 साल में, अभी तक तो नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह कभी हो भी ना. But that was my, you know, like whole story of how I started making these videos, and I still make them. When, you know, after a point, matlab, every day I get around 8 to 12 people messaging me in my inbox, WhatsApping me, giving me calls, saying, wow, man, I want to do voiceovers, can you help me? I want to do voiceovers. And मैंने ना अभी अपने iPhone में एक वो template बना लिया है. कीबोर्ड में एक वो होता है कि you press this button and that message will come. It copy paste a message. Okay. So I've done that. Right. And I forward them to my YouTube voiceover playlist. There are 18 total videos that I've made. Okay. Wow. And I've poured my heart and soul into it. And surprisingly, Tips and tricks में. Surprisingly, Devarjo, you will not believe. Out of those 100 people who contact me, probably 1 or 2 actually go to that link. And around 80 to 90% people think, अरे ये तो हमें टाल रहा है, ये तो हमें help नहीं कर रहा. They get offended. नहीं. They get offended. I'm telling you seriously, people have a huge ego these days. मतलब मैं उनको दे रहा हूँ कि ये लो, मेरे 18 साल का experience ये लो, पर उनको चाहिए ही नहीं. ये लो. उनको नहीं चाहिए.
So maybe one or two people. So they were, you are one of those one or two people who's actually seen those videos, and you saw value in it. Absolutely. So Not only value, I'm saying not only value, Ashish. I would like to say, I would like to take this opportunity to say that it's a very important endeavor by someone, guys. As Ashish said, this not only value. This is something that you should follow. You see, it's not magic. What Ashish is doing, it's not magic. It just doesn't happen like that, right? जस्ट ऐसे ही तो नहीं हो जाता ना कि यार चुटकी बजाते हैं हो जाता है, क्या कोई इसका चक्कर, ये तो कुछ लंबा चक्कर बता रहे हैं, क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कड़ी मशक्कत के बाद ये आदमी ना हमको लंबा चक्कर बता रहा है। कुछ चुटकी में कुछ नहीं हो सकता है, क्या कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और फिर जाके हम लोगों को वॉइस ओवर में काम मिलेगा। हाँ भैया, ये आशीष डेविड ऐसे ही करते आए हैं फॉर लाइक फॉर डेकेड्स, फॉर 2 decades और व्हाटएवर ही इज वर्किंग। ऐसे ही नहीं बन गया ये चैनल, ऐसे ही आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो मेहनत करने के लिए ये टिप्स, अब जैसे द टिप्स दैट यू गिव आशीष आर सो प्रैक्टिकल, दैट इज व्हाट आई फाउंड, दिस अ प्रैक्टिकल। और जो माइक के सामने खड़ा होता है उसको पता है कि ये टिप्स काम आती हैं बाद में। पहले तो हाँ ठीक है यार, वॉइस कैसे ठीक कर लूं मैं, वॉइस कैसे करूं, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए वॉइस ओवर करता हूं, तो फिर दैट आई थिंक इज टेक्स इट अवे फ्रॉम, takes the importance away from the role that we voiceover artists have, and that is why most people don't follow. That is why so much dearth of quality is there at this moment, I think, in voiceover, because most people think that हाँ ठीक है एक audio interface आ गया. I think you had a post on this also, like you once you did a post on this which I liked so much कि यार ये इतना common sense है इसमें कि यार कोई भी audio interface लेके एक mic लेके 10-15,000 खर्च कर लिया, एक उस पे हो गया उसका काम, voiceover artist बन गया, ऐसे ही करके पढ़ रहे हैं. But I think it takes a little more than that, man. It takes love for the work. And also, I believe that Devarjo, we are unfortunately in a time where people, from the letter to the telegram to the tweet, everything is become small. What people don't understand is some things don't work in a small format, man. Yeah. Videos work in a small format like TikTok. All that stuff like SMS, OK, LOL, emoji, वो उसमें ही चलता है. बट कुछ चीजों में ना टाइम लगता है भाई, और ये मैं किसी भी फैंसी तरीके से, आई कैन ड्रेस इट अप एंड मेक इट साउंड ब्यूटिफुल. The fact is, it's a lot of hard work. It's years and years of understanding your voice, of understanding sound. And मेरा क्या scene है ना, like I don't like doing anything halfway. So when I wanted, so my entire childhood, my entire youth has been spent in studios, man. Most of my best friends were all sound engineers. All of them, have ठोकोड my head again and again. अबे क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करते, ये बोल, ऐसे नहीं कर, ये क्या कर दिया, इनपुट गेन इतना क्यों बढ़ा दिया, देख क्लिप हो रहा है सिग्नल. मतलब these were the conversations I grew up in. I almost grew up in studios, man. Like लोग अभी बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की, मैं 20 साल से कर रहा हूँ. 20 साल से कर रहा हूँ. True. So I mean, so that has been the case. And you have spent in so many, Ashish, you have seen so many cultures in different countries through the eyes of voiceovers and radio jockeying and shows and studios. You've seen so many countries also. That evolution, I think, is very important. That is a very important chapter also. Yeah, and like I believe that if I have reached a certain place, and if I can't share that knowledge with the people of my country, of my city, तो मैं गधा हूँ. क्योंकि मतलब if only one person grows, if you look at the bigger picture, it's stupid, doesn't make any sense. If an entire community and an entire industry grows, so this is what I'm not taking, I'm not blowing my own horn, but this is something that I've nearly never seen in voiceover artists, because the biggest thing about most voiceover artists is the bottom line, that they are super insecure. Absolutely. Super insecure. भाई देखो, super insecure जो है ना, वो
it is counterproductive is what I would like to believe. Absolutely. Because किसी ना किसी ने देवो तेरे को भी हेल्प किया होगा, किसी ने मुझे भी हेल्प किया था, तो भाई तुम क्या किस सोने के बने हो कि तुम किसी और को हेल्प नहीं कर सकते? ये मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है. And that is the biggest philosophy of your show, Ashish. I think that's why I don't only see it as a popular show. क्योंकि अभी बहुत पॉपुलर चला हुआ है, सबको पता है आशी डेविड शो के बारे में, जो भी फेसबुक पे बहुत फैल गया ये. लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इट्स मोर देन पॉपुलर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये होना जरूरी था. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं चाहता हूँ कि ना यार ये एटीट्यूड जो है ना हेल्पिंग का, या किसी लाइक टू पास ऑन योर नॉलेज, राइट फाइन, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वर्क एंड योर वर्किंग आवर्स एंड योर अदर प्रायोरिटीज, बट जब तुमको मौका मिलता है जितना तुम कर सकते हो उतना तो यार कर ही दो यार. मतलब देखो किसी ने तुम्हें हेल्प किया है, तुम किसी को हेल्प करोगे, वो आगे जाके किसी और को हेल्प करेगा. डोंट वेट फॉर अ पैंडेमिक टू हिट अ वर्ल्ड इन ऑर्डर टू डिसाइड टू बिकम नाइस टू पीपल इन जनरल. राइट. ये मेरा भी मानना है. क्या एंड वॉइस ओवर में तो बहुत ज्यादा है कि पहले हम लोग जैसे सुनते थे ना कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है. जैसे कम्युनिटी हो गया. व्हाई? बिकॉज व्हाई डिड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर survive for so long? I think it's because of the क्या कहते हैं ना उसे, because of the endearment of its propagators. जैसे कि मतलब if you're encouraging people to come out and okay I'll teach you how to do voice over, okay, ऐसे यार भैया मेरा वॉइस ना डीप नहीं हो रहा है, मेरी वॉइस जो है बहुत पतली सी है एंड पीपल जस्ट मेक फन ऑफ इट. तो आशीष डेविड कैन टेल यू और लाइक maybe how to make it. You cannot sound and you cannot sound like him, or maybe you cannot sound like Nikhil Kapoor, but my saying is कि ठीक है भैया, थोड़ा तू तो खुद तो यूनिक हो, तो आप खुद यूनिक हो तो कैसे करते हैं उसको, माइक के सामने खड़ा कैसे होना है, या स्क्रिप्ट को कैसे स्कैन करते हैं, ये सारी चीजें सीखना is very important. सीख के आना is I yes, think very they important. can't become like Devarjo Banerjee either. They have to work hard for it. नहीं. How was your childhood? Where was it spent? What were your younger days in your life like? Yeah, I was like, I grew up in Calcutta only, and much of my life I've spent in Calcutta. And the thing is, the only difference being that I grew up in a project, a project community, like where people came for doing projects. Different people came from different walks of life, like from different states. और क्या होता था ना कि वहाँ पे मुझे साउथ नॉर्थ के सारे कल्चर्स जो है बहुत बचपन से मैं उसमें एक्सपोज था, क्योंकि we had Maharashtrians, we had Marwadis, I grew up in that culture, Tamil people, Malayalis and Konkanis, Goanis people. There were so many, it was a mixed match, and I think that contributed to my love of the language. Any language, I love languages. Like इसके बाद क्या हुआ कि I was exposed to music a little bit by my mother, who thought that it was important कि चलो क्लासिकल सीखते हैं, लेकिन सिंस वेस्टर्न क्लासिकल सीखना इज मच मोर इजी था फॉर मी, बिकॉज आई वुड नॉट सिट डाउन ऑन द हारमोनियम एंड प्रैक्टिस. वो मैं कर नहीं पाता था. तो इस पे पियानो पे उंगली चला लेना मेरे लिए इजी था. तो बेसिकली आई थॉट, शी थॉट दैट ओके इट वुड बी ओके इफ ही लर्न्स अ लिटिल बिट ऑफ पियानो. द मैजिक हैपेंड दैट लाइक माय मॉम, शी थॉट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न वेस्टर्न क्लासिकल पियानो. तो पियानो थोड़ा सा सीखना पड़ता है. whoever is musically inclined understands that music is constructed with chords. तो chord के बारे में बहुत दिलचस्पी होगी. I don't know why chords attracted me, and I started playing chords in different keys and scales, and धीरे धीरे I developed a little thing for sound and music, क्योंकि मुझे समझ आने लग रहा था कि यार ये जो गाना बज रहा है ना, गाने के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसके पीछे ये कॉर्ड बज रहा है, और मैं वो बजा के देखता था कीबोर्ड पे अपने यहाँ पे, तो इट साउंडेड द सेम. आई फेल्ट सो एक्साइटेड. तो आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट म्यूजिक एंड दिस थिंग. सडनली समथिंग हैपेंड. इट वाज अ लोकल HMV का कुछ चल रहा था वहाँ पे, FM को लेके. HMV सारेगामा हैड दिस FM कॉन्टेस्ट कि आप अपने रीमिक्स टेप्स भेज सकते हो, और उस जमाने में हम लोग क्या करते हैं ना, रील टू रील हम लोग रिकॉर्ड कर सकते थे. आई डिड नॉट हैव अ रील टू रील रिकॉर्डर, तो मेरे घर पे एक डबल डेक स्टेरियो सिस्टम था जिसपे मैं रिकॉर्डिंग करता था एक टेप से दूसरे टेप पे ट्रांसफर करके. तो उसके साथ मैं लाइन जोड़ के कनेक्शन करके, मेरे कुछ दोस्तों के साथ मैंने ऐसे किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने, और हमने कुछ मिक्स टेप्स बना लिए जो मतलब
उस जमाने में, I think it was the year, it was in 96 or something, and I was so excited. We didn't have any money, and we entered the competition. I lost very badly. No one recognized कि यार ये competitor भी है. And next year I went back again. Nobody recognized. तो उसमें क्या हो गया ना? I got hooked on to audio. और बहुत मतलब young age से ही मैं ऑडियो के साथ हूँ. तो इसके बाद क्या हुआ, आई स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट थिंग्स. जैसे होता है कंप्यूटर पे काम करते करते कि चलो यार वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी सीख ली, थोड़ा सा मोशन ग्राफिक्स सीख लिया कॉलेज. तो क्या करें, एक स्टूडियो में काम करता था, न्यूज़ व्यूज़ के लिए वो करता था. तो अचानक FM स्टार्टेड, यू नो, FM, प्राइवेट FM स्टार्टेड हैपनिंग. तो उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे पावर FM है, तो इंटरनेशनल चला रहे हैं लोग, तो यहाँ पे मुझे होना चाहिए, मैं कहाँ हूँ. तो मैं भी ज्वाइन कर दिया 2002-2003 में. उसके बाद मैं वहाँ आई जॉइंड एज एन इंजीनियर. और इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ फ्रॉम माय कोलीग्स एंड एवरीबॉडी, दैट आई डोंट नो वेदर आई वुड हैव डन एनीथिंग एल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वॉइस ओवर्स करता था. वॉइस ओवर्स ऐसे ही कर लेता था. बहुत पहले पेशेंस बहुत कम होती थी और आई यूज टू फील वेरी बैड अबाउट रीडिंग सो लॉन्ग स्क्रिप्ट्स. लेकिन बाद में धीरे धीरे आई ट्रेन्ड विद सम पीपल. दे टोल्ड मी हाउ टू डू वॉइस ओवर्स. दे टॉट मी हाउ टू यूज द माइक्रोफोन्स. तरह तरह के माइक्रोफोन्स कैसे होते हैं, इस टाइप का माइक कहाँ यूज करना है. तो I got into the thing and I have stayed with it. My thing is, if anybody wants to ask me, I have stayed with it long enough. मतलब मैं बहुत दिनों से ये कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यस थोड़ा बहुत प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ और वॉइस ओवर्स भी कर लेता हूँ दोस्त. तो दैट इज़ माई स्टोरी फ्रॉम बचपन. How important is training or getting a certificate or getting some kind of a degree as far as voiceover or sound engineering or radio is concerned? A degree or a certificate, it's important. कर लेनी चाहिए. अगर ट्रेन कर लेना, मतलब trained होना is very important, because end of the day when I'm in front of the mic or in the front of a console, in front of like such a big studio setup like Ashish David has right now, you can see all of us can see in the background, maybe there's a console somewhere, you know. It takes courage, and that courage comes from training. ऐसे नहीं होता. If somebody tells me that okay आज पंचटन इन चले जाओ, पंचटन इन जाकर मैं करूँगा क्या? वहाँ जाके तो मैं तो देख के तो डर ही जाऊँगा ना, क्या है, मतलब ये पैच बे क्या है, पैच बेस में ये क्या जा रहा है. तो साउंड को कैसे कनेक्ट करते हैं, एक डिवाइस को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे ड्रम को कनेक्ट किया. यूट्यूब में सारे वीडियोज हैं, लेकिन यूट्यूब में क्या है कि टुकड़ों में है. एक टुकड़ा यहाँ से आ गया, एक टुकड़ा यहाँ से आ गया, तो एक कंसाइज वो नहीं है. तो ट्रेनिंग होना इज इम्पॉर्टेंट. And I think training is not the only criteria, but training is important if you can afford it. But more important than that is passion. Tell us a little bit detail about how did that guy who was making tapes and putting line in and all end up doing this professionally? And also tell us a little bit about your college life. My college was basically, I am a little bit of a mismatch, because college में क्या हुआ था ना, I was a biology student. तो biology लेनी पड़ी थी मुझे, तो because of obviously grades, and I was never a big thing about studying back then. मैं study वडी नहीं करता था. तो क्या हो गया था, मुझे ये करना था, मुझे इंटरनेट और कंप्यूटर से बहुत लगाव था. So I thought कि यार अगर मैं कंप्यूटर से कुछ कर लेता हूँ, तो मुझे कंप्यूटर में कुछ कर लेता हूँ, तो मुझे ये साउंड के बारे में, मैं साउंड को इस पे पोर्ट कर सकता हूँ. तो मुझे कहीं मैंने पढ़ा था कि साउंड को भी यूज करके, उस जमाने में यू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज वेरी लिटिल, वी यूज्ड टू कैरी फ्लॉपी डिस्क टू द साइबर कैफे मैन टू गेट इन्फॉर्मेशन डाउनलोडेड और उस पे सर्च करने के लिए. तो बेसिकली आई यूज्ड टू डू दैट. सो मुझे लगा था कि यार इस पे कर सकते हैं हम लोग, इसमें साउंड एंड ऑडियो इंटरफेस यूज कर सकते हैं, प्रीएम्प्स के बारे में जान सकते हैं. लेकिन ये सब कर सकता हूँ मैं जब मैं कंप्यूटर्स के बारे में जान जाऊंगा, और ये कॉलेज के चलते तो ये नहीं हो सकता. तो कॉलेज को कैसे करके भी खत्म करना है पहले. तो मैं क्या करता था, कंप्यूटर क्लासेस चला जाता था. उस जमाने में एक बहुत पॉपुलर एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था तो कलकत्ता में. तो मैं कॉलेज कंप्लीट करके कभी भी कुछ करके, मतलब, और जियोलॉजी, यू अंडरस्टैंड जियोलॉजी एंड बायोलॉजी, इट्स सो बोरिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, यू हैव टू डाइसेक्ट इंसेक्ट्स एंड ऑल दैट. तो वो सब करने के उसके बाद, मतलब उसके बाद भी फिर प्लांट्स को लेके करना पड़ता था बॉटनी में. तो कहाँ मैं साउंड इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहा हूँ यार, कहाँ मैं 44.1 को लेके सोचूंगा. नहीं, यहाँ पे कुछ चल रहा है यहाँ पे, हाँ
प्लांट्स को लेके कोई हर्बेरियम बनाना पड़ रहा है, कुछ ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं कैसे करके उसको कंप्लीट करना चाहता था कि यार इसको हटा, यहाँ से खत्म कर इसको। तो खत्म करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ से साउंड में कुछ करने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है नहीं। तो जहाँ जो मुझे डिजिटल साउंड के बारे में इतनी अच्छे से, और हम लोगों को पता भी नहीं चलता था क्योंकि इंटरनेट में इतना डिटेल अवेलेबल नहीं था। तो बेसिकली आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन माय ओन एंड completely convince the most difficult person in my life, who was my dad, who was still alive back then, कि उनको समझाना कि यार आपको इस पे इन्वेस्ट करना है, even if you don't believe in it, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको कंप्यूटर खरीद के देना है, और सिर्फ कंप्यूटर से नहीं चलेगा। इट्स नॉट लाइक कंप्यूटर के हाँ यार इसमें ईमेल टाइप करूंगा मैं, कंप्यूटर मतलब विद प्रॉपर हार्डवेयर, साउंड हार्डवेयर। तो मेरे डैड को तो यार दिल का दौरा पड़ गया कि यार क्या करने वाला है ये, पता नहीं। तो जाके हम लोग कंप्यूटर सेटअप खरीद के लाए, और घड़ी के अंदर DIY जुगाड़ लगा के हम लोग माइक वाइक का सेटअप किया। और अंडे के वो नहीं होते हैं, अंडे रखने के ट्रेस नहीं होते हैं, वो अकूस्टिक जैसा ही दिखता है। तो बेसिकली उसको चिपका के बैंड का रिहर्सल भी अंदर चल रहा है, ड्रामे के लिए म्यूजिक भी चल रहा है, वहां पे म्यूजिक का प्रैक्टिस भी चल रहा है, ऑडियो एंड रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ। तो बहुत एंजॉय किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। यू वोंट बिलीव द काइंड ऑफ एनर्जी आई हैड बैक देन। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ माय प्रीवियस स्टफ अ फ्यू मंथ्स बैक। आई थॉट कि ये मैंने किया कैसे, ये पागलपंती में करता कैसे था। प्रोबेबली बिकॉज इट वाज, उस जमाने में क्या होता था, द लेस यू हैव द मोर यू वांट टू डू। अभी क्या है, लोगों को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस जमाने में बहुत एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। और मुझे तो खास करके मुझे कंप्रेसर्स के बारे में जानता था कि यार ये कंप्रेसर है क्या, इट्स लाइक अ होली ग्रेल, इसमें क्या है, कंप्रेसर में क्या डाला। कंप्रेसर तो फ्रिज का होता है, एसी का कंप्रेसर होता है, ये कौन सी बला। तो ये सारी चीज हम लोग फाइंड आउट। इट वाज सच अ ग्रेट जर्नी फॉर मी। और उसके बाद एफएम्स केम, एंड व्हेन एफएम आया तो धड़ल्ले से आई थॉट लाइक यू नो इट वुड कम इन पैकेट्स, कि मतलब दिस शॉक वुड कम टू मी इन पैकेट। लेकिन एक के बाद एक, और उसके बाद तो टेक्नोलॉजी की कोई अंत ही नहीं हो रही है। सो बेसिकली आई थॉट ओके, ये डैट आ गया, फिर MD रिकॉर्डर आ गया, ये फिल्म्स का सैम्पलर आ गया, ये सब तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कैसे काम किया जाए इन सब चीजों पे। और ऐसे ऐसे फेडर जो मूव करते हैं अपने आप, मतलब पहले कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक फेडर का लेवर आएगा जिसमें फेडर्स अपने आप मिक्सर पे फेडर्स ऐसे ऐसे करेंगे। एंड वी यूज्ड टू से टू सम अनअज्यूमिंग क्लाइंट्स कि यार मिक्सिंग चल रही है। और डेमो पे छोड़ देते थे, ऊपर नीचे फेडर्स होते थे और लोग समझते थे कि मिक्सिंग हो रही है। तो बेसिकली ऐसे हमने स्टार्ट किया, रेडियो स्टार्ट हो गया, पावर FM, वी स्टार्टेड विद पावर FM and I had very energetic, you know, that was the most important part of my training. अगर ट्रेनिंग के बारे में बात करना, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन लाइफ ट्रेनिंग मुझे वहीं से मिली कि यार बहुत ज्यादा मुझे क्या कहते हैं उससे, यार इंस्पिरेशन तो मिला ही, लेकिन बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट। दीज पीपल यूज्ड टू एनकरेज मी लाइक हेल कि यार तू ये सोचा कैसे यार। हो सकता है कि यार भद्दा सा भी आइडिया हो, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते थे और मुझे लगता था कि मैं और अच्छा करूं, और अच्छा करूं, और अच्छा करूं। तो ये करते करते थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया। फिर वन डे द आर्टिस्ट डिडंट टर्न अप एंड लाइक यार ये वॉइस ओवर तू कर देगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है कर देते, इसमें कोई अच्छी बड़ी बात। और ऐसे मेरा स्टार्ट हो गया, वॉइस ओवर करता रहा। वॉइस ओवर करते करते फिर बाद में बाहर के स्टूडियो से कॉल आने लगे, बाहर के स्टूडियो में गया और वहां पे लोग पैसे दे रहे हैं। मुझे बोले बेटा कितना पैसा लोगे, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो बस पिज्जा खाना और पिज्जा कोल्ड ड्रिंक में दिलचस्पी और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा क्या होता है, कितना बन पाता है, 500 400 500 में हो जाएगा, मेरे पिज्जा का ऑर्डर आ जाएगा उसमें। तो ये सब मैं करता था। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं यार इसमें ये ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। फिर आई हैड मेनी गुड पीपल टेलिंग मी how to go about voice over. Like I wish I had the Ashish David show back then, where Ashish David जैसे कोई experienced आदमी, इतना मतलब illustrious voice over person would come and tell us कि यार ऐसे खड़े हो, ऐसे मत बोल यार, पहले स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ ले, या फिर वॉइस को ऐसे मॉड्यूलेट कर रहे। अगर उस जमाने में होता तो I would have like minted money man. So that was my journey in a nutshell. Super man, this is quite inspiring, and you know for people who are like watching you, they're like यार सही मतलब बंदे को सिर्फ पिज़्ज़ा खाना था and he ended up doing so much stuff. Many people think that it's, you know, look at your success.
will look at your success. But the hard work that it took, no one spent those sleepless nights, those sessions, the pressure that you had to face. No one else had to do. They were partying, or they were just like, they were chilling off. But you gave that time. So for champions, I heard this somewhere, Ashish, that for champions, it's very important for champions to be champions even when the crowd is not there. जहाँ Yes. crowd नहीं होती है, जहाँ भीड़ नहीं है. और भीड़ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफॉर्म करना छोड़ दूं. जैसे the words of Mary Kom, the film Mary Kom, where she said, दुनिया मैरी कॉम को भूल गया है, लेकिन क्या मैरी कॉम फाइटिंग भूल गया है? So that was जज्बा जो उसमें मुझे दिखा इसकी, यार सही है. मतलब मैं जो करता हूँ वो मैं करता रहूंगा, in spite of people wanting me to be a part of the whole grand scheme of things or not. मैं करता रहूंगा. So that is why you are like you are today, why you are sitting in that great setup of yours. That is why तो उसके लिए तो करना पड़ता है यार, कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. बिजनेस एक चीज होता है, वॉइस ओवर इज एन आर्ट. First, it is an art. So you develop as an artist, and at some point of time, the business angle comes in. Right. You can't Right. become a voiceover artist because you want to get into the business. If you become a voiceover artist, you might, और वो भी मैं might बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के, मतलब maybe, might, not हो भी will. सकता है. हो भी सकता है ऐसा कि No, no, शायद no, no. कोई तुम्हें पैसे दे दे. कोई गारंटी नहीं है. गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. कोई गारंटी नहीं है. यू नो, तो मैं बोलता हूँ कि यार जैसे तुम म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, सोने के सिक्के खरीदते हो, धनतेरस वगैरह पे, ऐसा नहीं है ये. मतलब 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना अभी क्या है रिटर्न ना, ज्यादा आएगा उसमें. ऑडियो प्रोडक्शन और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की जो दुकानें होती है ना, वहाँ पे अगर तुम जाओगे ना देवो, एंड यू आस्क देम कि हमको वॉइस ओवर करने का है, हम क्या खरीदें, वो क्या करता है ना बंदा, वो चिपका देता है, स्कारलेट चिपका देगा, फोकस राइट चिपका देगा, कंडेंसर माइक चिपका देगा. They will get all of this equipment home, and then there is no soundproofing, there is no audio acoustic treatment, और वो रिकॉर्ड करते हैं उसको. कुछ नहीं. पड़ोस के घर के टॉमी की भी आवाज आ रही है उसमें, अपना एसी का भी आवाज आ रहा है, मम्मी पापा पे चिल्ला रहा है वो भी आ रहा है, सब्जी वाले का भी आवाज आ रहा है, एंड दे आर लाइक यार हमारा तो सी कट गया ब्रो. मतलब जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल जब बंदा गिटार उठाता है तो वो चाहता है कि वो सीधा ट्रांसपोर्ट टू सलमान खान डांसिंग विद 15 people around him, टंग 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 जाने जाना, और वो एक कॉर्ड बजाएगा, ठीक है, और उसमें सारी लड़कियां आ जाएंगी उसके पास. सेम वे, the very same way, you can't just suddenly decide to pick up a microphone, start speaking, and अबे स्टूडियोज में लड़कियां नहीं आती. Start sounding like Ashish David. स्टूडियोज में लड़कियां नहीं आती. हाँ यार, very alone play, very lonely places. Studios are very lonely places. You have to like so I very often compare. Debo, I'm also a motorcyclist, okay? So I like to travel. Yeah, absolutely. So I compare being a voiceover artist with being traveling on a motorcycle. वहाँ पे भी तो अकेला चला रहा है. मतलब वो जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी में ऐसा था ना, टन टन टन, वैसे नहीं चलाते लोग असल में, ठीक है. लोग, इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग टू सिट ऑन अ मोटरसाइकिल लाइक दिस and travel 400-350 kilometers in a day. It is tiring on your butt. No matter how big it is, your butt will get fall asleep. Yeah. Same as in the studio. You're just sitting and you're reading like some script. Some ebook. There are like scripts, like like I have like, I'm doing so many voiceovers in a day. They're like my whole, like, so your best friend are these scripts. Yeah. So like it's quite dull, and it takes a lot of perseverance to stick to it. So if you're somebody who's looking for instant results, instant money, not gonna happen. कोई फायदा. Ashish, you have to admit, bro, not everybody has your kind of voice, the range. I'm seriously, I'm not sarcastic when I say this.
See, you have got a deep baritone voice. You can go high, you can go low, because also you're a singer. But doesn't matter if the voice quality is not like you are always blessed with that kind of voice, like who can, like, move up and down. But my thing is, you have to fall in love with the voice of sound of your own voice. यार कितना अच्छा साउंड कर रहा हूँ मैं, ये खुद को भी थोड़ा सा बोलना चाहिए, नॉट इन द रॉन्ग कॉन्टेस्ट कि यार Yes. कुछ भी बोल दिया, मतलब लग रहा है कि यार कौन बोल रहा है, ये कौन सा सी आदमी है, लेकिन फिर भी वो बोले जा रहा है, ऐसा नहीं है. But you should give yourself some credit. So, Devo, now I'm going to ask you for tips and experience, and I'm warning you, do not get intimidated because I'm asking you this. I know अरे you will भाई, be. मुझे भैया already क्यों पता कर है. रहे हो ये सब? So, no, क्यों? okay, but I पहले को want, क्यों बोल- no, I want, so no, I want, see, so, okay, आधार so, पे- so to make it easier and to make it simpler and less pressurizing for you, after you've given your tips, I will give my tips. Fine? Please. Fair enough? अच्छा, मेरी टिप्स की क्या जरूरत है? मेरे टिप्स की क्या जरूरत नहीं, है? तुम्हारा जब- टिप्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि तुम आशीष डेविड शो पे गेस्ट हो. नहीं, आशीष आई एम द गेस्ट, हो सकता है, बट आल्सो आई एम अ फैन. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर. लिसन, देखो अभी I will take- अभी तुम मेरे भाई जैसे हो, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत. ओके सो वील कीप इट वेरी दिमाग- सिंपल. सो yeah. देबो, फॉर आई एम नॉट इन द रूम, this is just somebody asking, okay? So for example, if absolutely fresh somebody, in their 20s or whatever, they are wanting to get into voiceovers. So three simple tips that you would give to them as to how Okay. they can probably go about doing it correctly. So आशीष ऐसे वो कर देंगे. He will explain it a little more, of course, after this. But I thought कि मेरे को मैं जो करता Yes. था ना, मैं स्टूडियो में जाके वही मैं शेयर करूंगा. वो सबसे इम्पोर्टेंट 3 यही बातें होती है मेरे लिए. मैं जब भी सेशन करने के लिए आता हूँ, पहले तो मैं प्रेप करके जाना चाहता हूँ. थोड़ा बहुत प्रेप हो जाए. अगर लॉन्ग स्क्रिप्ट है तो प्रेप करना इज इम्पोर्टेंट. इफ इट इज अ लॉन्ग स्क्रिप्ट, मतलब 5-6 पन्ने से ज्यादा है या फिर 50 पन्ने है, बुक है, तो वो पढ़ के, थोड़ा बुक है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां जाकर वैसे ही पढ़ना होता है यार, थोड़ा थोड़ा करके वो कर लेते हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज मार्किंग. मैं बहुत मार्क करना चाहता हूँ. आजकल तो लोग यार व्हाट्सएप पे कर देते हैं, पीडीएफ पे कर देते हैं. वहां पे मैंने क्या किया ना, मैंने मार्कर, एक ऐप है जिससे मैं पीडीएफ पे डायरेक्टली मार्क कर सकता हूँ. तो पीडीएफ मार्कर करके मैं डाउनलोड करके उसको मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं मार्क करता हूँ मुझे लगता है कि मीनिंग काफ़ी इजीली समझ में आती है, वर्ड मीनिंग. एंड द थर्ड टिप विच आई वांट टू गिव इज कि मतलब अपनी आवाज़ को सुनना विदाउट द हेडफोन्स. तो ये हेडफोन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं भी है तो लीक को इन स्टूडियो देयर इज अ थिंग कॉल्ड लीक बहुत ज़्यादा आता है हेडफोन से. अगर हेडफोन वॉल्यूम वो आपके सिग्नल से माइक्रोफोन से वापस जा सकते हैं. द स्टूडियो इंजीनियर विल मेक यू अंडरस्टैंड, बट मेक श्योर दैट यू कैन हियर अ लिटिल बिट ऑफ योर वॉइस. मे बी यू कैन आस्क द इंजीनियर टू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द सिग्नल, सो दैट एटलीस्ट आपको अपनी आवाज सुनाई दे द वे यू आर सेइंग, यू आर लिसनिंग टू इट. देयर इज समथिंग कॉल्ड बोन ट्रांसमिशन, जो कि हमारी हड्डियां होती हैं आँख की, वहां से ट्रांसमिट होकर साउंड भी अपने अंदर जाती है ना. तो बेसिकली वी हियर दैट, सो दैट इज रीअश्योरिंग फॉर अस, not as the listeners are listening, for us. So it's very important to keep a little bit of space for your own voice. तो यही 3 टिप्स मेरे लिए है. एक तो है प्रिपरेशन करके जाना, अगर if it's a very heavy recording. 2 is marking the script. अगर आप मार्क कर लोगे कहाँ कहाँ पॉज डालना है, तो it's a very important thing. Third thing is listening to your voice a little bit. Say for example, if people want to practice or something, like they don't have any gear, as a sound guy, what would be your recommendation? I would suggest go for the best you can afford. I'm not saying ultra cheap होने के फायदे हैं, but getting cheap is also going to keep you poor. If you buy only cheap clothes, you're going to look poor through and through, even if you're not poor. So once you start making money, you're still going to sound poor. So I think you should go for the best. So my theory is the same, man. No matter what I do, my thing is whatever you're doing, do it properly. Whether it's voiceovers, whether it's sound, Right. engineering, or you're working on a song, or whether you're singing. Vocally, I would say I have a slight advantage because somehow, my range is beyond the normal human range somehow. I don't know how. Yeah.
ये मुझे पता नहीं है कैसे हुआ है, ये भी भगवान का ही है. So that is why No, I but can sing really high songs and I can Yeah. do really deep voiceovers as well. That's what that is what, like, you know, that is what stuck It's with me. I have beyond heard that. your I this think 3.5 octave range or something, वो जो normal Yeah. range होती है, मेरी हाँ, उसके हाँ. beyond है, थोड़ी सी ज़्यादा है उससे. yeah. I don't know how Because it you happens. have a head voice, and I have heard your 2020 jingle, which is the first one I heard, and then I heard you singing the singles. I mean, the kind of, just like you said, the peaks and the valleys have, like, you know, big differences. And I think, did you sing at the choir at some point of time in your life? So I've been singing with a cappella choirs since childhood. There you go, my friend. So I've There been you singing go. with a cappella choirs almost all my life. Oh So God, I'm Ashish. that's why I'm educated with, you know, jazz harmonies and Yeah, bass yeah, and alto, soprano, tenor Yeah. and all that stuff. So Wow, man. actually I was a singer much before voiceover and radio happened much later, like when I was, I think, in my early 20s it happened. But throughout, like since I was 4 or 5 or something, I've been singing, I've been in studios, I've been in radio stations. So मतलब मेरा पूरा Wow. बचपन, yeah, Studios में बीता है. पूरा सब No, कुछ. it is very evident when you sing certain passages. I've heard when you collab with other singers, or when you sing passages. I've heard those are very difficult passages, my man. I mean, it's really, you know, for you maybe it's very easy breezy, but for vocalists, it's very difficult to achieve that, and that is probably because of your jazz training. Because jazz has these notes, no? These. Yes. And also jazz is very improvisational, so it's not just a simple thing that you're Yeah. doing. Jazz will take a simple Right. song and make it super complicated. A little bit of recording knowledge is also important. It's not like Very good. complete. जैसे आपने कहा था ना शुरू में बिगनिंग में कि थोड़ा सा यार होना चाहिए. मतलब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजा के चला गया, उसको पता भी होना चाहिए कि प्रोसेसर में ये प्रोसेसर जाता कहाँ है. मेरा गिटार प्रोसेसर है तो ये प्रोसेसर जाती कहाँ है, इसकी जो लाइन है ये कहाँ जा रही है, केबल कहाँ जा रही है, They have और to जहाँ भी understand जाए. A to D. हाँ, a little, not much, लेकिन ये सीख के जानना is very important. या जैसे मैं रिकॉर्ड करता था अकेले, so I found this on a like, you know, way back I found this technique. एक ऐसी रिकॉर्डिंग को बीच में अगर मैंने गलती कर दी तो उसमें सुन के करने से अच्छा है कि एक ऑडियो क्यू आ जाए. तो this is something that people might recognize as a dog clicker. ये Wow. डॉग्स को बुलाने के लिए ऐसे करते हैं. तो मैंने क्या किया ना, एक ट्रैक में अगर मैं रीटेक करने से पहले एक ऐसे मार दिया 2 बार, तो दिस विल बी वेरी अननेचुरल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग व्हिच इज देयर. So there'll be a तो ये spike 2 in क्लिक्स आ the. जाएंगे वहां पे, तो उसको मैं काट सकता हूँ. अगले स्पाइक से पहले मैं काट सकता हूँ वो पैराग्राफ. तो ये एडिटिंग में आसानी होती है. Maybe if you are watching this, you could go to a studio, you know, become friends with the engineers there, you know, tell them that, you know, hey, I'd like to know a little bit, can you show me कैसे होता है. So my tips are going to be very small and precise, because अगर आपको सारे tips चाहिए तो आप मेरे YouTube channel पे जाके देख सकते हो. But a few basic tips that I would like to give is that one, I would like to say that it's very, very important to have some kind of a demo in place. So tip number 1 is demo. Some kind of a demo. Number 1. As a matter of fact, ये उससे पहले आना चाहिए था tip, but I'm going to give it nonetheless. Get some kind of training from someone who's a voice coach. मैं नहीं हूँ voice coach, you know, देबो voice coach नहीं है, but there are some people online somewhere or the other in the world who are giving voice coaching. Get in touch with them, invest some kind of money. Don't be afraid of investing in yourself. Get some kind of voice coaching. Point number 2. Point number 3, I would like to say is that if you can afford to get any microphone and an audio interface, get it. Even if it is on OLX, even if you get a second hand one, even if it's a cheap one, भले आपको
आगे फ्यूचर में वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बनना हो, इवन फॉर स्पीकिंग, यू नो, रिकॉर्डिंग पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज, अपनी खुशी के लिए एक ऑडियो इंटरफेस और माइक रख लो. कोर्स फोर्थ टिप तो तुमने ऑलरेडी बोल दिया जो मैं बोलने वाला था. Marking your script is very important. Whenever I'm working with the script, I mark two things in specific. One is a pause and one is a stress. So, Right. for example, Absolutely. if the sentence is Debo and Ashish were having a wonderful conversation over a podcast. Debo and Ashish were having a wonderful conversation over a podcast. अब इसमें wonderful जो है वहाँ पे आप stress डाल सकते हो. हाँ. Right, so then it will be like Debo and Ashish were having a wonderful conversation over a podcast. Then you can add a smile. So if I'm saying like this, you can see my face. Debo and Ashish were having a wonderful conversation over a podcast. This is without a smile. With a smile, Debo and Ashish were having a wonderful conversation over a podcast. So smiling while talking makes a huge difference. Expressing, okay, this is something that a lot of people don't encourage, but I encourage. Use your hands to express yourself. Yeah, I do that a lot actually. Yeah, मैं बहुत करता हूँ. और कभी-कभी क्या हो जाए, माइक वाइक में नॉइज आ गया, मुझको बोला दादा ये ऐसे मत करो यार, इधर उधर ऐसे मत करो, हाथ लग रहा है इसमें माइक में. लेकिन कभी-कभी हाथ यूज करने का मतलब ये नहीं है कि you start boxing with a microphone. Excited होके कर भी थी. Sometimes what happens is when you use your hands, somehow it affects your voice. Nobody knows how. What is the magical connection between the hands and the voice? Yeah. But there is some magical connection. No, absolutely. You are absolutely right. There is a magical connection there. When it changes the way you say something. Absolutely. Yes, because in real life also, no, when we speak, no, we have a way of talking hand to gestures. people. Hand gestures. Right? I mean, see, you're a Bengali, I'm a Christian. हम लोग बहुत हाथ इस्तेमाल करते हैं. You know? बहुत करते हैं यार, बहुत करते हैं. जैसे मैं मिडिल ईस्ट में शवरमा खाता था ना, देवो, तो मैं बोलता था हॉट सॉस डालो, हॉट सॉस डालो. So those have been my tips. Absolutely wonderful, man. Wonderful. And I hope people will get some kind of value from this. Okay, I have this message, Ashish, if you would permit me. Please. I would like people, more and more people in all the 65 countries joining in, and everybody should understand that all of us are friends. There's no countries. Countries are just for maps. We are countries, we are people, made of people, right? And if we can come together, all of us, maybe not everyone, but like people who are in the same fraternity as like performing arts, content creation, like Ashish's motorcycling and weight loss. And so if we can connect together with this kind of a platform like the Ashish David Show, that's why I said that it's very important. It's more than popular. It's a popular show, but it's a very important show also. So if all of us make a little effort to, just join, so that we can all come together, become a huge community in the internet, the Ashish David Show, with Ashish at the helm. Of course, him doing like his thing, him being himself, that is, like giving us great advice on business advice, business tips, how to become successful in voiceovers and radio and music and singing. Whatever you're doing, you can just do at the corner of your world, and it's going to be okay. But we should all know about each other, right? Like today, Ashish has given me a chance to tell a little bit of my story. I feel so great. This is something that has not happened to me before. I'm like, I'm a person behind the mic ना, तो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन अपनी स्टोरी बोलने को कभी वो मिलता नहीं है. तो आज यहाँ पे चांस दिया भाई ने. So I think all of us can come together for this wonderful, wonderful platform called the Ashish David Show. So everyone should join in and share it as much as possible. Share it as much. Ask so many questions. Maybe Ashish can find some time to answer them, and maybe not. Maybe not all. It's not. He's a busy person. It's not possible for him to go through everything. But whenever he can find, maybe he can. But we should all ask our questions. Our questions will be there with his social media and his YouTube channel. And I wish Ashish David Show the best of luck for the years to come. I want it to become the biggest show on internet.
Thank you so much, Debo, for being a part of the Ashish David Show. Debarjo Banerjee, Joe, Debo, so many names. But, you're someone who had humble beginnings. You started, with recording things on a 2-deck tape recorder. You were attaching lines, you were trying to go to remix, competitions, stuff like that. And then you went into radio. You worked with radio for for a while. You did sound engineering. Now you're into voiceovers. You are someone who's, found a lot of synergy in a lot of these things. And at the same time, you're a wonderful human being, bro. We both share love for pizza Thanks a lot, man. and Coca-Cola. And Yeah. one day, I'm pretty sure after the lockdown is over, we're going to catch up. I'm going to come to Kolkata. You're going to come to Delhi, or we're going to meet somewhere and we're going to have a conversation, and it's going to be awesome. Yeah. By being on this Awesome, show, you have not just shared your story, you've helped and inspired millions and millions of people who are watching this show right now. Thank you so much for it. Ashish, I feel so much full. Like for just one day, it feels like, okay, see, there's an imminent lockdown in the whole country at this moment, but like there's a looming, shadow of things to come. But I don't want to put this negativity in this show now. But I want to say that for one day at least, I felt so okay. It's okay to have done what I did. Many people blame me for like not doing much. Sound में क्या रखा है, sound engineering में क्या है, sound production करके क्या होता है, सब तो lockdown हो गया, अभी कौन सुनेगा तेरे को? But it's okay. When I came to the show, when I first joined you or started following you, today I'm feeling the same way. I feel like it's okay. It's okay to do what you're doing. It's not a bad thing. It's okay to do what you're doing and earn that way. So I feel great. Coming to your show, I feel fulfilled and satisfied that I'm very proud of it, actually. Very proud of your show. Thank you so much, bro. It was lovely having this conversation with you. Tell people where they can reach you on social media, or if you have certain links that you'd like to share where, people can get in touch with you for voiceovers, for some kind of sound engineering. They want something mixed, motion graphics, video editing. This guy is multi-talented. How can they reach you? Yeah, so basically, I have my Instagram handle. I'm not very as active as Ashish, of course, but I have my Instagram handle by my name, debarjo.banerjee, and apart from that, I have my Facebook links where anyone can DM me, and I have a website coming. I'm not yet put together. It's called One Voice Connection. So it's like a small thing that I have going, where I have my samples and demos, and all my clients can come and they can share their experiences on it. So it's a small platform which I can share. And other than that, I don't have a YouTube channel. It's called Make.Believe. There's not much content on there right now, but it's still there. It's called Make.Believe. Get to me using my phone number, that is +91 983040715, and my email ID is debarjo.banerjee@gmail.com, and One Voice Connection Files@gmail.com. These are the two email IDs. One Voice Connection Files@gmail.com. These are the two email IDs that I'm interacting with you right now. So you can contact me anything with any requests or audio or video requirements that you have for me. Super, man. Thank you so much for your time. It was great having you on the Ashish David Show. I hope, by the next time that we talk over the next maybe season, or maybe after a few seasons, you will have a bunch of more inspirational stories, and we're going to have it, hopefully, over pizza. Maybe you can order pizza there, I can order pizza, and while we are eating. I don't think, Ashish, you're going to have a lot of pizza back then. Because you will have lost so much weight that you would not want to put all that back together, right, man? Absolutely, man. Maybe it could be a healthy pizza or something. You never know. But anyway, salad, man, baby, a salad. Till next time, you have yourself a lovely evening, and you too, man. Great having you over. I shall catch you soon. Till then, take care, and goodbye from Ashish David, man. Goodbye, man. Goodbye, Ashish. Bye. See Love you. you, man. See you.